Hello everyone, I am Dr. Rachna Dubey and today I will be talking about some important facts about pregnancy. What is the total weight gain in one single pregnancy? Well, in one single pregnancy लगभग 11 kgs weight gain होता है. First 3 months में 1 kg, second 3 months में 5 kgs और last के 3 months में another 5 kgs weight gain होता है. How much calcium is required during pregnancy? प्रेगनेंसी में लगभग 1 to 1.5 ग्राम्स कैल्शियम पर डे की आवश्यकता होती है. शुरू के दिनों में यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स में 500 ग्राम्स, उसके बाद मिडिल 3 मंथ्स में लगभग 1 ग्राम एंड इन द लास्ट 3 मंथ्स एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन अनदर 500 ग्राम्स यानी कि 1.5 ग्राम्स इन द लास्ट 3 मंथ्स एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन दिया जाता है. व्हाट आर द इंडिकेशंस दैट यू मे बी प्रेग्नेंट? Well, the most important sign of pregnancy, as we all know, is amenorrhea. यानी कि अगर if you have missed your period or you have had an overdue of your period, if you are having breast discomfort या आपको थकान महसूस हो रही है या फिर मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, जी मचला रहा है या फिर बार बार यूरिन करने की इच्छा हो रही है, then you must consult your doctor if you are in the reproductive age group that you may not be pregnant. डिलीवरी के कितने दिन बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए? आई एडवाइज दैट डिलीवरी के तुरंत बाद, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो तुरंत बाद ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, बट अगर सीजर हुआ है तो एज सून एज यू आर कंफर्टेबल, यू आर बैक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ योर स्पाइनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया, यू कैन गिव ब्रेस्ट फीडिंग. The best thing which you can give your baby is the colostrum. It is high in antibodies, immunoglobulins, and it is a live fluid which will protect your baby from respiratory infections, digestive tract infections. So do not forget to give the first milk, that is the colostrum, to your baby. How long will I become absolutely normal like the pre-pregnant state? यूट्रस लगभग 6 वीक्स में पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करके नॉर्मल साइज एंड शेप में आ जाता है. When will my vagina become normal as before pregnancy? Well, vagina will take a longer time to come back to normal. That is लगभग 8 weeks लगते हैं to completely involute to the normal size. But actually for vagina I would say that it will never come back to the pre-pregnant state which it was earlier, because dilatation के बाद it does become normal but not totally normal as the pre-pregnant state. For how many days bleeding and discharge lasts after delivery? Well, the bleeding will finish in 3-4 days time, but the discharge can continue for a longer period of time. जो डिस्चार्ज होता है उसके अलग अलग कलर्स होते हैं जिसको हम लोकिया बोलते हैं. इनिशियल 1 to 4 days रेड कलर का डिस्चार्ज होता है, लोकिया रूब्रा. उसके बाद 5 to 9 days के बाद लोकिया सिरोजा विच इज़ येलोइश पिंक पेल ब्राउन इन कलर, एंड लास्ट के 10-15 days तक जो होता है वो वाइट रंग का डिस्चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड लोकिया एल्बा, एंड आफ्टर दैट द डिस्चार्ज यूजुअली फिनिशेस. व्हेन विल डिलीवरी हैपन? The doctor can only give you a tentative date of your labor pains by a formula which we call as Naegeli's formula, but that is only a rough guide. Based on this formula, the labor can actually start approximately on the expected date which the doctor gives you in only 4% of the cases. 1 week plus and 1 week minus in about 50% of the cases. 2 weeks earlier or maybe 1 week later in as high as 80% of the cases. It can go up to 42 weeks in about 10% of the cases, and even beyond that, that is 43 weeks in about 4% of the cases. How much time does the labor pain last? The first stage of labor, that is from the true labor pains till the end of the complete dilatation of your cervix, that is the place from where your baby is coming out, this is called the cervical stage. जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही होती है उनमें जो सर्वाइकल स्टेज होती है वो लगभग 12 आवर्स की होती है, बट इन मल्टी पैरेसिस दिस इज अबाउट 6 आवर्स. देन कम्स द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. द सेकेंड स्टेज इज व्हेन योर सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड एंड द बेबी इज एक्सपेल्ड आउट. दिस फेज is about 2 hours in first time mothers and about 30 minutes in multiparous women. जो थर्ड स्टेज होती है that is when the baby is already out but the placenta and the membranes are coming out. That takes about 15 minutes in primary, that is the first time mothers, और जो ग्रैंड मल्टीपैरिस या पैरिस women होती हैं उसमें 5 minutes लगते हैं. But this is an active stage and इसमें अगर डॉक्टर्स एक्टिवली मैनेज कर लेते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर,
So it takes only 2 to 3 minutes. Do the baby in the womb listen and understand sound and words? Well, the whole Garbh Sanskar science which you keep hearing is revolving around the fact that the baby actually understands in the mother's womb. So be very, very careful next time when you speak loudly or violently to a pregnant mother. आप pregnant woman से क्या बोल रहे हैं? Womb में baby can understand. It can understand words, music, sound, and especially the sound processing parts आखिरी के 3 महीने में बहुत active हो जाते हैं. And nature of the baby also depends on how happy or how sad the mother is during those 9 months. When does the heartbeat of the baby come? A fetal heartbeat may first be detected by a vaginal ultrasound as early as 5 weeks to 6 weeks. After gestation, that's when the fetal pole and the first visible sign of developing embryo can sometimes be seen. But between 6.5 to 7 weeks after gestation, a heartbeat can be better assessed. So that's the time when the heartbeat can be assessed by an ultrasound. Thank you.